Diphtheria, it is a highly infectious disease of childhood. It is caused by a bacterium, Corynebacterium diphtheriae. Corynebacterium diphtheriae, it primarily infects the throat, and it leads to exudative pharyngitis and membranous tonsillitis. Corynebacterium diphtheriae, it produces a toxin, that is diphtheria toxin, and this toxin will lead to exudative pharyngitis and membranous tonsillitis. Diphtheria toxin is the primary virulence factor responsible for diphtheria. This toxin is a polypeptide chain and it has two fragments. Fragment A, which is the active fragment, and fragment B, which is the binding fragment. This fragment B will bind to the host cell receptor like the epidermal growth factor, and this will cause the entry of fragment A. Then fragment A will enter and it will cause the inhibition of EF2, that is elongation factor 2, by ADP ribosylation of EF2, and this will lead to the inhibition of translation step of the protein synthesis. So diphtheria toxin, it is a polypeptide chain. It has two fragments. Fragment A, which is the active fragment, fragment B, which is the binding fragment. The factors regulating toxin production are: the diphtheria toxin is phage coded. It is coded by a bacteriophage which carries the tox gene. It is carried by a bacteriophage beta corniphage, and this carries the tox gene. Then toxin production also depends on the iron concentration. The optimum iron concentration should be 0.1 milligram per liter. Okay. Other species like Corynebacterium ulcerans and Pseudotuberculosis, they also produce DT. In laboratory diagnosis, we do toxin demonstration. Why? Because the pathogenesis is due to the diphtheria toxin. So just isolation is not enough. We also do the toxin demonstration. And this toxin demonstration can be done both in vivo and in vitro. So toxin demonstration in vivo is done in guinea pig. Okay. In vivo test for toxin demonstration, that is, the culture broth is inoculated in an animal which is guinea pig, but this technique is rarely followed nowadays. So in vivo test mein we have animal inoculation, we use guinea pig. In vitro test mein the most important one is LX gel precipitation test. In vitro test most important is LX gel precipitation test. Other in vitro test for toxin demonstration are PCR. See, in PCR we detect the tox gene, detection of tox gene by PCR. Then ELISA and ICT, that is immunochromatographic test, is also used for detection of diphtheria toxin. Then cytotoxicity produced on cell lines. Other in vitro tests for toxin demonstration are PCR, which detects tox gene, ELISA and immunochromatographic test for detection of diphtheria toxin, and cytotoxicity is produced on cell lines. LX gel precipitation test is an example of precipitation reaction. It is a type of immunodiffusion which happens in gel, and it was described by Elec. LX gel precipitation method में there is a मीडिया जिस पे एक एंटी टॉक्सिन सोक्ड फिल्टर पेपर होता है. ठीक है, दिस इज द मीडिया एंड देर इज अ एंटी टॉक्सिन सोक्ड फिल्टर पेपर, और इसमें हम कॉर्नी बैक्टीरियम के स्ट्रेन्स को स्ट्रीक करते हैं. दीज आर द डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ Corynebacterium diphtheriae. These are streaked perpendicular to the filter paper. Filter paper is antitoxin soaked. There is an antitoxin soaked filter paper,
एंड दिस इज़ अ मीडिया जिसमें हम कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया के स्ट्रेन्स को परपेंडिकुलरली स्ट्रीक करते हैं। जो टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स होंगे वो टॉक्सिन लिबरेट करेंगे। ये टॉक्सिन मीडियम में डिफ्यूज़ होगा और एंटी टॉक्सिन के साथ जब ये मीट करेगा देन इट विल फॉर्म एरो शेप्ड प्रेसिपिटेशन बैंड। ठीक है, जो टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स होंगे वो टॉक्सिन रिलीज़ करेंगे और जब वो टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन से मीट करेगा तो ऐसे प्रेसिपिटेशन बैंड्स बनेंगे। ठीक है, एरो शेप्ड प्रेसिपिटेशन बैंड्स विल बी फॉर्म्ड। इन एरो के शेप्स से वी कैन ऑल्सो सी द रिलेटेडनेस ऑफ द स्ट्रेन्स। जैसे कि अगर दो एरोज़ के बीच में क्रॉस ओवर हो रहा है इट इंडिकेट्स अनरिलेटेड स्ट्रेन, और अगर दो स्ट्रेन्स के बीच में स्पर फॉर्मेशन हो रहा है मतलब पार्शियल क्रॉसिंग हो रहा है इट इंडिकेट्स पार्शियल रिलेटेड स्ट्रेन, और अगर कंप्लीटली फ्यूज़ हो जा रहा है दो एरोज़ देन इट इंडिकेट्स आइडेंटिकल स्ट्रेन्स। जैसे ये एक मीडियम है जिस पे एंटी टॉक्सिन सोक्ड फिल्टर पेपर है और इसमें 5 स्ट्रेन है डिप्थेरिया का, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया का 5 स्ट्रेन है। तो इसमें से जो स्ट्रेन 1, 2, 3, 4 है ये सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए एरो बन रहा है। ये जो 5th स्ट्रेन है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता है इसलिए कोई भी एरो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, जो टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स होते हैं वो ऐसा एरो फॉर्म करते हैं। देन अगर ये प्रेसिपिटेशन बैंड के बीच में क्रॉस ओवर हो जाता है, जैसे यहाँ क्रॉस ओवर हो रहा है, तो इट इंडिकेट्स अनरिलेटेड स्पीसीज़, अनरिलेटेड स्ट्रेन्स। मतलब जो स्ट्रेन्स है वो एक दूसरे के कम्प्लीटली नॉन आइडेंटिकल है, नॉन आइडेंटिकल स्ट्रेन्स है, तो क्रॉस ओवर बैंड फॉर्मेशन होगा। और अगर स्पर फॉर्मेशन होता है मतलब पार्शियल फ्यूज़न हो रहा है तो दैट इंडिकेट्स पार्शियली आइडेंटिकल स्ट्रेन्स, और कंप्लीट फ्यूजन हो रहा है तो दैट इंडिकेट्स कंप्लीटली आइडेंटिकल स्ट्रेन्स, कंप्लीटली रिलेटेड स्ट्रेन्स। तो अगर क्रॉस ओवर बैंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, क्रॉस ओवर बैंड फॉर्म होता है तो इट इंडिकेट्स अनरिलेटेड स्ट्रेन्स। अगर स्पर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, स्पर फॉर्मेशन हो रहा है मतलब पार्शियली रिलेटेड टू ईच अदर, और अगर फ्यूजन हो जाता है तो दैट इंडिकेट्स completely related to each other. So LX gel precipitation test is the most important test for toxin demonstration of Corynebacterium diphtheria.